बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तमाम दोस्तों को रोज़गार इन्फो चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़। अगर आप लोगों ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन, नेस्कॉम और स्पेशली कैरियर जॉब्स 91 में अप्लाई किया और इनकी टेस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आप लोगों को एटॉमिक एनर्जी में बार बार रिपीट होने वाले एमसीक्यूज़ मिलेगी। अगर आप लोगों ने नेस्कॉम या एटॉमिक एनर्जी और स्पेशली कैरियर जॉब्स 91 में ऐसे डीआई बेस या असिस्टेंट के बेस पर अप्लाई किया है और इनकी टेस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में ना सिर्फ आप लोगों को एमसीक्यूज मिलेगी बल्कि साथ साथ आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिलेगी और इसमें मैं आप लोगों के साथ जो फाइल शेयर करने वाला हूँ एमसीक्यूज का, इसी का पासवर्ड भी मिलेगी। लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसी के दरमियान में मैं आप लोगों को पीडीएफ का पासवर्ड दूंगा, आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन इससे पहले तमाम न्यू व्यूवर्स से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन ज़रूर दबाना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो में आप लोगों को मोस्ट 100 रिपीटेड एमसीक्यूज मिलेगी जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन और नेस्कॉम और स्पेशली कैरियर जॉब्स 91 में बार बार रिपीट होने वाले एमसीक्यूज हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में आप लोगों को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज मिलेगी और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप लोग कैरियर जॉब्स 91 के टेस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हो तो इस सीरीज़ को आप लोग फॉलो करें, वीडियो को आप लोग ज़रूर आखिर तक देखें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले नंबर पर जो एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोमोबाइल। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है एरोप्लेन। एमसीक्यूज नंबर 2, द टॉर्क अवेलेबल एट द कॉन्टैक्ट बिटवीन ड्राइविंग व्हील्स एंड रोड इज नोन एज ट्रैक्टिव एफर्ट। MCQ number 3, the rolling resistance is because of the friction between the tire and the road surface। दोस्तों, इसके जो आंसर थे सिर्फ यहाँ पर वो गिवन है, बाकी इसमें जो एक्स्ट्रा ऑप्शन थे वो यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता था और इसके साथ साथ यहाँ पर ये 100 MCQs है तो ये फाइल को सपोर्ट करने में मसला था, तो इसी वजह से बाकी को मैंने रिमूव किए। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, द पावर एक्चुअली डेवलप इनसाइड द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड एज इंडिकेटेड पावर। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पावर प्लांट इन ऑटोमोबाइल इज आईसी इंजन। करेक्ट आंसर इज आईसी इंजन। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, द पेट्रोल इंजन वर्क ऑन ऑटो साइकिल। नेक्स्ट एमसीक्यू, द पेट्रोल इंजन आर आल्सो नोन एज एसआई इंजन। Next MCQ, the diesel engine work on diesel cycle। 9 number MCQ, the diesel engine are also known as CI engine। ये MCQs कैरियर जॉब्स 91 में 2020 में जो टेस्ट है उसी में ये क्वेश्चन आया था। The diesel engine are also known as CI engine। इसके बाद नेक्स्ट MCQs for the same maximum pressure and temperature। Correct answer is diesel cycle is more efficient than Otto cycle। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, in diesel engine the fuel is ignited by। Correct answer the heat of compression। Next MCQ, the combustion process in a diesel engine is a। Correct answer constant pressure process। Next MCQs, the compression ratio of petrol engine is nearly 8:1। करेक्ट आंसर इज 8:1 है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट MCQ, द कंप्रेशन रेशो ऑफ ए डीजल इंजन इज नियरली 15:25। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, इफ क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ आईसी इंजन इज इंक्रीज देन कंप्रेशन रेशो विल बी डिक्रीज। जब क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ आईसी इंजन का इंक्रीज हो जाए तो कंप्रेशन रेशो डिक्रीज होगी। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, द मटेरियल यूज्ड फॉर सिलेंडर ब्लॉक आर कैस्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम अलॉय। इसके बाद 17 नंबर MCQ, इन ए एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक द सिलेंडर लीनियर्स आर मेड ऑफ कैस्ट आयरन। करेक्ट आंसर इज कैस्ट आयरन। Next MCQ, the material generated used for cylinder sleeves
is cast iron. इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, द सिलेंडर स्लीव्स आर यूज्ड फॉर रेजिस्टेंट टू वेयर। करेक्ट आंसर इज रेजिस्टेंट टू वेयर। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, द साइज ऑफ इंजन सिलेंडर इज रिफर्ड इन टर्म ऑफ बोर एंड स्ट्रोक। करेक्ट आंसर इज बोर एंड स्ट्रोक। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन इज द डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी। आप लोग दोस्तों कमेंट में बताइए कि टीडीसी का एब्रीवेशन क्या है एंड बीडीसी का एब्रीवेशन क्या है, यानी कि बीडीसी स्टैंड फॉर एंड टीडीसी स्टैंड फॉर व्हाट। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, द टू काइंड ऑफ पिस्टन रिंग्स आर कंप्रेशन एंड ऑयल कंट्रोल रिंग्स। करेक्ट आंसर इज कंप्रेशन एंड ऑयल कंट्रोल रिंग्स। इसके बाद दोस्तों 23 नंबर एमसीक्यू, इन एन इंजन द टेम्परेचर ऑफ द पिस्टन विल बी मोर एट द क्राउन ऑफ द पिस्टन। करेक्ट आंसर इज क्राउन ऑफ द पिस्टन। The piston compression ring are made of cast iron. Correct answer is cast iron. MCQ number 25. The crescent shaped cavity on the piston head top surface is called as valve recess. MCQ number 26. The connecting rod connects the piston and the crankshaft. Correct answer is crankshaft. नेक्स्ट एमसीक्यू, द फंक्शन ऑफ ए कनेक्टिंग रॉड इज डैश। इसका करेक्ट आंसर है द ट्रांसमिट मोशन ऑफ द पिस्टन टू द क्रैंकशाफ्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, द कनेक्टिंग रॉड इज अटैच्ड टू द पिस्टन बाय, सो द करेक्ट आंसर इज पिस्टन पिन। नेक्स्ट एमसीक्यू, द कनेक्टिंग रॉड आर जनरली मेड ऑफ डैश शेप्ड क्रॉस सेक्शन। कनेक्टिंग रॉड आर generally made of eye shaped cross section, so correct answer is eye shaped. MCQ number 30. What type of bearing is used for main bearing and connecting rod bearing? So the correct answer is plain bearing. Next MCQ, the camshaft in an engine is always mounted. Correct answer is parallel to crankshaft. MCQ number 32. The timing belt is attached to the camshaft pulley and timing belt drive pulley. Next MCQ, the motion of the cam is transferred to the valve through camshaft pulley. MCQ number 34. The valve overlap in 4-stroke petrol engine is approximately 30 degree. दोस्तों ये MCQs काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है। ये एटॉमिक एनर्जी में 2-3 बार रिपीट हुआ है। इससे पहले भी जो दिसंबर 2020 में जो टेस्ट थे उसी में भी यही MCQs आया था। द वाल्व ओवरलैप इन 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री। नेक्स्ट MCQ, द सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन अ 4-स्ट्रोक इंजन इज सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। Next MCQ, in petrol engine during suction stroke is driven in the cylinder, air and fuel is the correct answer. Next MCQ, in diesel engine during suction stroke is driven in the cylinder, only air. Correct answer is only air. Next MCQ, when the piston at TDC, the volume above the piston in a combustion chamber is the clearance volume. Correct answer is clearance volume. Next MCQ, exhaust gas from petrol engine contain petrol vapor, water vapor and carbon monoxide. Next MCQ, a petrol that denotes easily is called low octane petrol. Next MCQ, the octane rating of petrol commercially available is 85 to 95. Next MCQ, the natural gas is compressed in a CNG cylinder at a pressure of 200 bar. आप लोग कमेंट में बताइए कि CNG stand for dash. Next MCQ, the calorific volume of petrol is about
42.7 to 43.5. Next MCQ, the specific gravity of petrol is about 0.75. पेट्रोल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.75। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट्स में बताइए कि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, यानी कि कितने टेम्परेचर पर वो बॉयल होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट MCQ, द कैलोरीफिक वॉल्यूम ऑफ डीजल इज अबाउट 42.5। MCQ, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डीजल इज अबाउट 0.85। Next MCQ, the boiling point of diesel fuel is in the range of 180 degree centigrade to 360 degree centigrade। यहाँ पर ये आ भी गया। इससे पहले जो MCQs आया था 1384 के टेस्ट में, the boiling point of petrol fuel is in the range of dash, कुछ इस तरह का MCQs था। लेकिन यहाँ पर गिवन है the boiling point of diesel fuel is in the range of dash 180 degree centigrade to 360 degree centigrade। नेक्स्ट MCQ, द रेटिंग ऑफ IC इंजन फ्यूल यानी कि डीजल इज गिवन बाय केटीन नंबर। नेक्स्ट MCQ, द केटीन नंबर ऑफ एन डीजल फ्यूल इज मेजर्ड बाय डिले पीरियड। नेक्स्ट MCQ, द केटीन रेटिंग ऑफ डीजल फ्यूल इज इन द ऑर्डर ऑफ 45। नेक्स्ट MCQ, एयर फ्यूल मिक्सचर ignited before the spark takes place at spark plug is called pre-ignition। Next MCQ, one effect of detonation is loss of power। Next MCQ, the fuel that denoted easily is N-heptane। Next MCQ, the firing order of an online 4-cylinder IC engine is 1342। Next MCQ, the self-ignition temperature of diesel as compared to petrol is low। ये MCQs काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है, ये किनोपी के टेस्ट में भी आया था। इसके अलावा 1737 में जो मैकेनिकल DIM मैकेनिकल वालों का जो टेस्ट था उसी में भी ये MCQs आया था। दिसंबर में था या जनवरी में जो टेस्ट था उसी में आया था। द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल एज कम्पेयर टू पेट्रोल इज़ लो, तो करेक्ट आंसर इज़ लो। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, इन केस ऑफ डीजल कार द प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इज 45 बार। Next MCQ, diesel engine as compared to petrol engine required bigger flywheel। दोस्तों इस PDF का जो पासवर्ड है वो है रोज़गार इन्फो 9922। आप लोग इसको डाउनलोड करें, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आप लोगों को और भी स्टडी मटेरियल मिलेगी, वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। नेक्स्ट MCQ, द वॉल टेप्ड क्लियरेंस इज मेजर्ड बाय पिलर गेज। Next MCQ, instead of valves, the ports are used in case of 2-stroke IC engine। IC stand for dash। आप लोग कमेंट्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिए। Next MCQ, the device for smoothing out of the power impulse from the engine is flywheel। So correct answer is flywheel। Next MCQ, in a diesel engine, the function of a fuel injection is spray atomized fuel in the cylinder। Next MCQ, the two rows of cylinder in a V-shaped engine are generally arranged at 60 degree। Next MCQ, the anti-knock property of compression ignition engine fuel can be improved by adding amyl nitrate। Next MCQ, the best fuel for compression ignition engine are naphthalene। Next MCQ, the indicated power of a 4-stroke engine is equal to plan by 2। Next MCQ, indicated power and fractional power are known as brake power। Correct answer is brake power। Next MCQ, the mechanical efficiency of an IC engine is equal to BP by IP। Next MCQ, the air gap between central electrode and ground electrode of a spark plug is around 1 mm। Next MCQ, in a petrol engine the high voltage for spark plug is in the order of 22 kilowatts। Next MCQ, engine misfiring is likely to result from spark plug gap too wide। Next MCQ, the engine oil stored in dash when the engine is not running। So दोस्तों करेक्ट आंसर इज ऑयल पैन, यानी कि the engine oil stored in oil pan when the engine is not running।
Next MCQ, the oil pump is driven by the crankshaft directly. Next MCQ, an oil filter bypass valve open when the engine overheats. Correct answer is engine overheat. Next MCQ, the component of the oil filter that prevents the passage of metal particles and sludge is element. Correct answer is element. Next MCQ, the main cause for the change in engine oil viscosity is. Correct answer is temperature. Next MCQ, which of the following oil is more viscous? Correct answer is SAE80. Next MCQ, if the engine coolant leaks into the engine oil, then the engine oil appears milky. Next MCQ, the commonly used antifreeze solution in automobile is ethylene glycol. Next MCQ, the heat transfer from coolant to air in the radiator of an automobile engine takes place by convection and radiation. Next MCQ, the component in the radiator of an automobile that increases the boiling point of water is pressure cap. Correct answer is pressure cap. Next MCQ, the purpose of an thermostat in an engine cooling system is to allow the engine to warm up quickly. Correct answer is allow the engine to warm up quickly. Next MCQ, the temperature indicating instrument in vehicle indicates the temperature of jacket cooling water. Next MCQ, the main function of intake manifold is that it distributes intake air equally to the cylinder. Next MCQ, the number of exhaust manifold in a V6 engine are 2. Correct answer is 2. Next MCQ, the main function of a resonator is that reduce the intake air noise. 87. The most effective method of controlling SI engine exhaust emission is by using catalytic converter. Next MCQ, the starting system include a battery, a starter and ignition switch. Next MCQ, the starting up motor is driven by gear drive. Next MCQ, the ignition coil is used to step up voltage. Correct answer is step up voltage. Next MCQ, the capacity of a battery is usually expressed in terms of ampere hours. How many cells are used in a 12 वोल्ट कार बैटरी? दोस्तों ये MCQ काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है कि हाउ मेनी सेल्स आर यूज इन 12 वोल्ट कार बैटरी. करेक्ट आंसर इज 6 volts. Next MCQ, the specific gravity of acid in a fully charged battery is generally 1:8. Next MCQ, the acid used in automobile battery is sulfuric acid. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है. The acid used in automobile battery is dash. So correct answer is sulfuric acid. Next MCQ, the instrument used to check specific gravity of acid in a battery is hydrometer. Correct answer is hydrometer. Next MCQ, the positive plates of lead acid battery has lead peroxide. Next MCQ, the negative plates of a lead acid battery has spongy lead. Next MCQ, with the increase of battery temperature, the specific gravity of electrolyte decreases. Correct answer is decrease. Next MCQ, a maintenance free battery lead calcium plate grind. MCQ number 100, the function of an alternator in an automobile is to continually recharge the battery. तो यहाँ पर 100 MCQs कंप्लीट हो गए. यहाँ पर मैं इसी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ. उम्मीद है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के ये MCQs आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी. इसमें मैंने आप लोगों के साथ जो MCQs शेयर किए वो मैंने मुख्तलिफ पेपर से लिए हुए हैं और एटॉमिक एनर्जी और निस्काम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है, बार बार रिपीट होने वाले MCQs है. इसमें ना सिर्फ एटॉमिक एनर्जी की बल्कि निस्काम और स्पेशली किरजात 91 के भी MCQs है. अगर आप लोगों ने इस 100 MCQs को अच्छी तरीके से तैयार किए तो उम्मीद है इनमें से 3-4 MCQs ज़रूर आएगी
और इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट भी आसानी से क्लियर हो जाएगी। अगर आप लोग टेस्ट को पास करना चाहते हो तो इस सीरीज़ को आप लोग फॉलो करें। इसके बाद मैं मज़ीद भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आखिर में दोस्तों मैं आप लोगों से माज़रत करना चाहता हूँ अगर मैंने इसमें कोई एमसीक्यू गलत लगाया हो, इसका आंसर गलत हो या मैंने वर्ड्स में मिस्टेक किया हो, क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एमसीक्यूज़ इसलिए शेयर किए कि मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स मैकेनिकल की भी है, तो मैंने समझा कि आप लोगों के साथ एमसीक्यूज़ शेयर करूँ, शायद आप लोगों की हेल्प हो जाए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।